Hello and welcome back. This is a video lecture on the course syllabus of Gondwana University Masters in Computer Science Second Sem Web Technologies. We all are discussing PHP in our videos, and in my previous video we have discussed the echo and the print statement. If you all have might have executed the programs given in the previous video. So in case you might have executed the previous programs given in the earlier video, you could have seen that the output of both the print and the echo were exactly same. So now we move ahead. Our next topic is data type. As you can read in this text that what the data type means. So like in Java and in C++, these are the programming languages where you need to mention the type of data before declaring, like int a. So in that particular case, your a variable can store only integer value. If you write char c, so in that particular case your c variable can store only character value. But unlike in these programming languages, PHP, there is no need to specify data type before using it. Wow, isn't it great? You need not mention the data type, you directly use the variable. Data types are the backbones of any programming language. Now I will be showing you one example. In this example you can see PHP, in the first variable you are storing the value 15, and the second variable you are storing the value 38. And now in the third step there is one more variable sum, where you have calculated test into test 1. Now you are printing with the help of echo statement. You are printing the first value, second value and the result. So here the most important thing to note was कि टेस्ट और टेस्ट 1 में आपने 15 और 38 को तो स्टोर किया, बट यू नेवर एवर गेव द डेटा टाइप. मतलब उसमें आपने मेंशन नहीं किया था कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल कौन सा डेटा स्टोर करेगा, न्यूमरिक डेटा स्टोर करेगा कि कैरेक्टर डेटा. यू डायरेक्टली डिक्लेयर्ड द यू डायरेक्टली यूज्ड द वेरिएबल, यू नॉट इवन डिक्लेयर्ड द वेरिएबल. You on your screen you can also see the output. First value is 15, second value 38, result is 570. Children, I am really hope that you people are executing these programs. Please, after looking at this video, type it, and after you type you can also you should execute the programs. And if there is any problem, please comment me, or you can WhatsApp me. You have the WhatsApp number. We will move ahead. The next topic, they have just given in description of this program. In this example, test1 are integer type variable. After multiplying test and test1, obviously you will get an integer result, and that integer result is stored in the variable $sum. But you haven't said कि $sum variable का data type क्या है. You directly used it. That is the beauty. Now you can use a get type function to check the type of the variable. Now, but what different types of data types are available, that we are going to discuss. So you have string data, you have integer data, you have floating point number, that means your decimal numbers. You have boolean data, you have array data, you have object. I hope you know what is boolean. Boolean means the variables having the value yes or no, true or false, 0, 1, flag type values, array, object and null. Now let us discuss the hierarchy of data types. So basically there is 3 data types: scalar, compound and special. Let's see with the help of a diagram. See, in this diagram they have shown data type. You have scalar data type. Scalar मतलब जो single value store करेगा वो scalar data type है. मतलब integer, float, string, boolean ये सब at a time one value को ही store करेंगे. Special data type में आपका null data type आता है. Compound data type एक टाइम पे एक वेरिएबल मोर देन वन वैल्यू को स्टोर कर सकता है. इसका एग्जाम्पल है एरे एंड ऑब्जेक्ट. सो स्केलर डेटा टाइप, कंपाउंड डेटा टाइप एंड स्पेशल डेटा टाइप. Later on they have given the definitions also. Scalar data means that data that contains only one value. जिस डेटा में सिर्फ वन वैल्यू स्टोर कर सकते हो उसे स्केलर डेटा बोलेंगे. There are 4 scalar data types. इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, ये चारों डेटा टाइप में आप एट अ टाइम ओनली वन वैल्यू को स्टोर कर सकते हो. एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर ऑन योर स्क्रीन. अ होल नंबर फॉर इंटीजर्स, सो फॉर एग्जाम्पल $a is 38. Float, a floating point number, $a is 5.50. String, sequence of characters, $a equals to any particular string.
and boolean, as I told you, either true or false, that is $a is true or false. Okay, then you all know this, what is integer data type? An integral whole number without a decimal value. Integers can't store decimal, for that you have a different variable, different data type. Integer numbers are used for counting purpose like 38, 8, etc. Floats, decimal values. So float numbers hold fractional values like 38.025, 7.652, etc. It's used for banking and financial sector calculation. Third data type is your string data type. It's just a kind of character array. कैरेक्टर एरे समझ लो, क्योंकि स्ट्रिंग में तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होंगे ना, तो एक एरे ही समझो कि कैरेक्टर का एक एरे है, एक के पीछे एक कैरेक्टर स्टोर हो गए, फॉर एग्जांपल जॉन का एक्सेट्रा. इट्स यूज फॉर स्टोरिंग द एरे ऑफ कैरेक्टर. लास्ट वन इज योर बूलियन डेटा टाइप, होल्डिंग वेरिएबल्स ट्रू और फॉल्स. Now this is an example. PHP, your two variables x y both store the same value, hello world, hello world. Next is y variable, next is variable z holding 5985, w variable 10.365, names variable storing an array of Usha, Supriya, Shilpa. Next is p variable storing the value hello world. Next is p variable holding the value null. So many variables with different values. Now with an echo statement displaying x, you get the output hello world. With an echo statement br, you get the line break. Yes, HTML tags, I told you in my previous video also. With the help of echo statement you can, or the print statement, you can even use your HTML tags. Echo y, what will it print? Again it will print a hello world. Another thing you note here, okay, another thing is var dump, and you have used as an argument zw names and p variable. What is this dump going to do? Dump tells the type of data it is holding. इस particular variable में किस type का data है, अगर आपको ये display करना है तो आप ये dump function का use कर सकते हो. I hope the program is clear. अब इस फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा, कैसा आएगा, ये हम आउटपुट स्क्रीन पे देखेंगे. तो क्योंकि आपने सबसे पहला स्टेटमेंट एको एक्स लिखा था, पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ. सेकेंड स्टेटमेंट बी आर था तो लाइन ब्रेक होके न्यू लाइन में आ गया. थर्ड एको था वाई, वाई में क्या स्टोर्ड है, अगेन हेलो वर्ल्ड, तो अगेन हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हुआ है. अब आपने लाइन ब्रेक नहीं यूज़ की, इसलिए नेक्स्ट सब कुछ एक लाइन में प्रिंट होगा. अच्छा, वैर डम $z, व्हाट इज स्टोर्ड इन z? 5985. इट इज़ एन इंटीजर वैल्यू. तो देखिए आपने ये वैर डम $z का आउटपुट है इंट 5985. ओके, नेक्स्ट है फ्लोट, नेक्स्ट है एरे, नेक्स्ट इज ऊषा. अच्छा, ये जो एरे है ना, ये एरे 3, इट इज गेटिंग ब्लर. हाँ, वैर डम्प नेम्स, वो एक एरे स्टोर कर रहा था, एरे ऑफ साइज 3, जिसमें 0th लोकेशन पे था उषा, 1th लोकेशन पे था सुप्रिया एंड सेकेंड लोकेशन पे था शिल्पा. लास्ट वन इज नल, तो नल का तो नल ही निकलेगा. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द गिवन फंक्शन. इफ इट वॉज शेकिंग द स्क्रीन, आई एम जस्ट कीपिंग अ स्टिल मोबाइल so that you can read it. Next is an example of Boolean data type. A is holding the value true. Okay students, this topic we are going to learn ahead in my next video. For now, please practice this program, and if you have any doubt, please comment me. Thank you.